इवनिंग एवरीवन। तो आज आम पढ़ा जियोलॉजी। तो आइरन स्टार्ट करा। तो व्हाट इज ओर आम जानते। तो ओर इज जनरली naturally occurring rock or sediments which consist of one two or more than two minerals or metals from which it can be extracted profitably. तो तक हम कौन करते ना ओर कहा जाए। तो हमें जनरली पड़ेगा आयरन ओर। तो जनरली हमें जानते जे आयरन इज used hugely in our daily life. तो हमें यदि हिस्ट्री को भी देखिएगा तो यूज ऑफ आयरन हैज चेंज द कोर्स ऑफ मेनी सिविलाइजेशंस। तो आयरन हमें डिफरेंट फॉर्म में मिले जनरली की ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स और सिलिकेट्स। तो ऑक्साइड्स जनरली एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन, कार्बोनेट जनरली कार्बन डाइऑक्साइड्स, sulfide with sulfur, and silicates generally silica. So iron oxides are generally hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4, turgite 2Fe2O3 2H2O, goethite Fe2O3 3H2O, limonite 2Fe2O3 3H2O, and carbonates are siderite, sulfide of irons are pyrite marcasite, and silicates are chamosite. तो तुमको एगुड़ा को मन रखा पड़ो फर्मुलास और कहारो और कौन एथिक। देन मोड ऑफ ऑकरेंस। तो हमें आयरन को डिफरेंट मोड में मिले या डिफरेंट फॉर्म में मिले एंड दिस फॉर्म्स आर जनरली होता है डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनेसिस को प्रोसेस रे फॉर्मेशन हला और को डिपोजिशनल सेटिंग्स का को कंडीशन रे डिपोजिशन दैछे ताकू लेके हमें डिफरेंट मोड होची रो आयरन और पानी। Generally, these are massive, granular, laminated variety, and they are associated with black sands in pressure deposits. Magmatic ore deposits are generally also found, which are bedded, residual concentration deposits, lateritic deposits, and in case of cells, which we are generally found nodules of iron. So, हमें यहाँ जानते हैं different variety of iron ore जो है most important variety the most abundant iron ore मिले पूरी ना वेल्डेड आयरन फॉर्मेशन रे। तो सेठी कौन है ना अल्टरनेट लेयर ऑफ आयरन और सिलिका था जोटा कि हमें एक्चुअली टू टाइप ऑफ बीआईएफ में हमको बीएचए बा बीएचक्यू। तो वेल्डेड हेमाटाइट जस्पर बा वेल्डेड हेमाटाइट क्वार्टजाइट। तो केमिति फॉर्मेशन है हमें नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़वा। तो हमें जेमति कहले लेटेड डिपोजिट्स and nodules and concretions are associated with carbonaceous cells and coal seams, and magnetic deposition are generally laminated, granular. Now, these are formed in various conditions like contact metamorphisms, magnetic injection, or segregation. Origin को लेके पड़ेगा। तो classification according to the origin of the iron deposits, they are classified as magmatic deposits, sedimentary deposits, replacement deposits, contact metasomatic deposits, residual deposits, and oxidation and secondary enrichment deposits. केमती कौन फॉर्मेशन है ना वो हमें पढ़ना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट है magmatic deposits। तो हमें यहाँ इंट्रोडक्टरी कि various igneous rocks are directly precipitated or directly formed by the cooling of different magmas. तो सेमिति आयरन ओर जनरली मैग्नेटाइट पॉइंट है ना बेसिक मैग्मा जनरली द कंपोजिशन है गैब्रोइक रॉक फॉर्मेशन होता है। तो गैब्रोइक रॉक में एनी काइंड ऑफ गैब्रोइक रॉक कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ मैग्नेटिक। तो डिफरेंट वेरियस सुइटेबल कंडीशन में कौन है ना मैग्नेटिक रो एनरिचमेंट देखे माने नॉर्मल कंडीशन में अधिक मैग्नेटाइट पॉइंट है ना जी प्रेसिपिटेट का डिपोजिट्स है। तो सेमती टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिपोजिट्स फॉर्मेशन है। सेडिमेंट्री which is iron ore. So sedimentary iron ore कौन होता है ना generally formed by the weathering erosion then deposition process of iron.
तो जनरली ମନେକର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଓସେନ ଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ ତ ଆଇରନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରକ୍ରେ ଏନଜିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳକୁ ୱେଦରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ତ ଯେଉଁ ରକ୍ରେ ଆଇରନ୍ ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ୱେଦର୍ଡ ହେବ। ଦେନ୍ these are eroded by different agents like water, mainly water. Then ସେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫକୁ ଆସିକି କ'ଣ କରିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟାରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଇରନ୍ର ଜେନେରାଲି ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥାଏ Fe2 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ Fe3 ପ୍ଲସ୍। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଆଇରନ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜେନେରାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଥାଏ। ତ ସେ ୱାଟର କଣ୍ଡିସନରେ Fe2 ପ୍ଲସ୍ ଆସିକି ମୋବାଇଲ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଏଇ ଓସେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ହ୍ୟାଲୋ ମେରାଇନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ଥାଏ ନା ଯଦି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଏନରିଚ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ସେତେବେଳକୁ ହେମାଟାଇଟ୍ ବା ଗୋଏଥେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଜେନେରାଲି ଆସୋସିଏଟ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲା ସେ FeCO3 ସିଡେଡାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଦେଇଥାଏ। सेम जिनस ये लिखा है हमें जहाँ डिस्कशन कले सेडिमेंटरी डिपोजिट्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन जनरली सेम प्रोसेस लैंड टू इरोड ही के आसीबा जनरली डिपोजिट्स तब ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन बा जनरली एसोसिएटेड कार्बोनेट्स से सेडेड होया डिपोजिट्स देता है। देन तो जो हमें जहाँ पढ़ते हैं से जनरली जो सेडिमेंटरी प्रोसेस से डिपोजिट्स होता है जनरली बेंडेड आयरन फॉर्मेशन टाइप डिपोजिट्स था। हमने कहले जो अल्टरनेट लेयर्स ऑफ आयरन हेमाटाइट सिलिकेट बाद आसो आउ से फर्दर मेटामॉर्फिज्म जते वर्क होइछो बेंडेड हेमाटाइट क्वार्जेट देता है। हेमाटाइट से जास्पर जेतु से सिलिका एंडिश सिलिका कौन कन्वर्टेशन क्वार्जेट तो फॉर्मेशन देता है। देन रिप्लेसमेंट डिपोजिट्स द रिप्लेसमेंट डिपोजिट से कौन होता है जो बीएचए फॉर्मेशन है सेठी कौन है ना फर्दर सिलिका कौन करिवो ना डिफरेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से रीच्ड आउट हे जो देते हो ताको Fe2O3 बा आयरन ऑक्साइड रिप्लेस करते तबे करिवो तो सेते को रिप्लेसमेंट डिपोजिट्स फॉर्मेशन होता है। जनरली कौन होता है ना हमर झारखंड और सिंहभूम रीजन रे जो थाए हेमाटाइट डिपोजिट्स these are generally replacement deposits. Then contact metasomatic deposits. तो मेटामॉर्फिज्म तो मैं पढ़ी छो तो contact मेटामॉर्फिज्म में कौन होता है ना जनरली उनके igneous inclusions बॉडी ऐसे कंट्री रॉक को जदि कंट्री जदि जो igneous inclusion का आयरन रिच थिबो से जेते को कंट्री रॉक को सहित रिएक्ट करबो सेते को कौन करेगा देखिता है contact metasomatic deposits है। देन तो ये हम जो पढ़ते हैं हेमाटाइट जास्पर अल्टरनेटिव लेयर होची ता फर्दर मेटामॉर्फिज्म वाले हेमाटाइट जास्परटा कौन है ना जो मेटामॉर्फोस की क्वार्जेट फॉर्मेशन होता है। देन हमें पढ़िबा लेटेटिक आयरन और केमती फॉर्मेशन होता है। So how lateritic deposit iron ore are deposited? तो laterites are formed by intense chemical weathering in the atmosphere और which is lithosphere interface रे formation होता है। तो हमें जानते हैं which is laterization पे तीनटा dominant cause अच्छी process अच्छी first है ना requirement है ना high rainfall or climatic condition that should be humid tropical climate जोड़ा कि chemical weathering पाई most suitable। ता सहित topography also plays an important role जते कम रिलीफ हेबो रिलीफ अधिक हेले से कोन वाटर को मूवमेंट अधिक होई छी तो जते कि कम रिलीफ हेबो दैट इज मोर सुटेबल फॉर लेटेटिक प्रोसेस। तो लेटेटिक प्रोसेस में कोन होता है जनरली गोटे अनवेदर्ड रॉक एटी अछि तो फर्दर से कौन करियो ना ड्यू टू रेन वाटर
विशेष रेन वाटर कंडीशंस रेन वाटर आम जानते कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसे कौन कार्बनिक एसिड फॉर्मेशन करता है ता सहित कौन था ना जेहेतु वेजिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर वेजिटेशन डिफरेंट ह्यूमस बा डिफरेंट केमिकल क्रिएट करते हैं जोटा कि कौन करेगा ना केमिकल वेदर प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं तो वेदर ड्रॉप होता से कौन करेगा ना फर्दर कि वेदर सॉरी अनवेदर ड्रॉप थी से कौन करेगा पार्शियली वेदर ड्रॉप देव फर्दर से कौन करेगा ना एक्चुअली ड्यू टू केमिकल एक्शन से कौन करेगा ना अनवेदर ड्रॉप अनवेदर then partially weathered, then ये देखो क्या कहते हैं lithomarch. Lithomarch is nothing but the layer of clays. तो clay का composition कौन है kaolinite plus multisalite. तो further से कौन करेगा ना जैसे वो weathered होगा unweathered, then partially weathered, lithomarch. Then it is called the gibbsite and goethite. The gibbsite is the ore of aluminium and goethite is the ore of iron. These are all on the hydroxide ore. तो ये डिफरेंट लेयर जो डिफरेंट जो each स्टेप रे कौन होता है ना सिलिकेट्स और अल्काली मिनरल्स गुड़ा कौन होते हैं ना लेयर रो बाहर जाएंगे और गिब्साइट और गोएथाइट जो डिफरेंट लेयर फॉर्मेशन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना EH और pH चेंज तो हम तुम्हें फर्दर आपको पढ़ लेगा वो तो आयरन इज जनरली मोर एसोसिएटेड विथ कौन ना EH change while aluminum is generally associated with pH change. तो जनरली pH suitable pH हेले aluminum कुछ फॉर्मेशन हबो और suitable EH फॉर्मेशन हेले आयरन फॉर्मेशन हबो तो सेमती लेटरेटिक आयरन फॉर्मेशन होता है तो ए कंडीशन रे देखियो टेरेस्ट्रियल कंडीशन रे एटी लेटरेटिक फॉर्मेशन होता है देन आयरन स्टोन्स तो आयरन स्टोन इज एन ओर इज अ टाइप ऑफ ओर ऑफ आयरन तो जोटा कि एसोसिएटेड विथ केमिकल वेदरिंग कंडीशन रे जनरली कहना ओडेटिक आयरन ऑफ फॉर्मेशन होता है व्हिच इज फर्दर कौन होता है ना एब्रेडेड इनटू शैलो मेरेन बा स्वाम्प कंडीशन जोटी की कौन होता है से मुझे डिपोजिशन देता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन बा ड्यू टू इरोजन ऑफ द रिवर तो ये फर्दर स्लाइड्स आना तो जनरली ये लेटरेटिक फॉर्मेशन होची तो से कौन करिवो ना वेदर तबे ता एसोसिएटेड इन आयरन स्टोन हबो आयरन स्टोन डिफरेंट ट्रांसलेशन बा वेदरिंग रे से कौन हेबो ना जाइकी एटी सेल्फ रीजन बा डेल्टा रीजन बा शांति रीजन रे कौन दबो ना आयरन स्टोन डिपोजिट दबो एटी फॉर्मेशन ट्रैवल करके दबो से जब फर्दर ट्रैवल करे फाइनर ग्रेड आकार रे से सेल सहित एसोसिएटेड होता है जो कि ब्लैक सेल्स दिखता है दिस इज द डिपोजिशन ऑफ आयरन स्टोन बुझिएला हमें पढ़िया सुपरजिन एनरिचमेंट डिपोजिट्स तो हमें जानते सुपरजिन एनरिचमेंट जानते तो जनरली ना ग्राउंड वाटर टेबल तो डिफरेंट जोन्स है ना each zone LESCH release zone then oxidized zone metal water table then supergene enrichment zone तो ये कौन होता है ना जते को रेन वाटर आसे तो सेते को जदि एठी गोटे रॉक अछि which is more which is enriched in iron and different minerals which are mobile in nature जेहेतु आयरन कौन थी ना रेजिस्टेंट टू वेदरिंग थी से कौन करिवो ना जति सब रेसिडुअल डिपोजिट्स गुड़ा अछि ना रेसिडुअल आयरन सहित एसोसिएटेड जो डिपोजिट्स अछि से ताको कौन करिवो ना वेदर करके नहीं आसीबो तो
डिफरेंट कंडीशन से जनरली सपोज जदि कपर अच्छी कपर कौन कर ना ये ऑक्सीडाइज कंडीशन अच्छी वाटर टेबल ऊपर ऑक्सीजन एनरिच वाटर टेबल तले कौन ना ऑक्सीजन डिप्लीटेड थी तो ये कपर ऑक्सीडाइज डिपोजिट्स तो ऑक्साइड डिपोजिट्स तो ये कौन ना कपर सल्फाइड डिपोजिट्स रहा और ये जेहतु आयरन और इज जनरली मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग से आयरन एनरिचमेंट ये रही जनरली एफी ऑक्साइड्स गुड़ा डिपोजिट्स होता है এটা आपको कहते सेकेंडरी एनरिचमेंट डिपोजिट्स देन यूजेस तो हमें मोर और लेस समझते आयरन यूजेस गुड़ा जानी these are generally used to extraction of iron in the form of cast iron, wrought iron, steel, and different alloys. Generally, building construction, armed tools, machine, railways, wagons, and automobiles, ships, buildings are generally for this we use iron. In coal vessel, we use iron as a medium of flotations. तो कौन है ना आयरन गैंग मिनरल को फ्लोट करने जनरली हमें आयरन यूज हुए कोल वसलीज की which iron also used for making pig iron or steels, different sponge iron. So then just steels different steel में chromium, manganese use होता है, but to make it more strengthened. Then magnetite and other minerals also used in paints for coating and welding rods for generation of hydrogen, etc. तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आयरन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जनरली पांचटा जोन करा जाइछि तो बान जोन वाला जोन ए कोडी होछि ना झारखंड और झारखंड वाला सिंहभूम और ओडिशा रीजन है जोन ए जोन बी जनरली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सेक्टर द ईस्टर्न महाराष्ट्र सेक्टर देन जोन सी इज जनरली ईस्टर्न कर्नाटक which is consist of Bellary Hospet sector जोन डी generally Goa, Maharashtra Ratnagiri, and northern Karnataka region comes under Zone D, and western coast of Karnataka और Kerala कौन जाए ना Zone E रह जाए तो सही जिनसे लिखा है जोन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिंहभूम इन झारखंड एंड कटक ओडिशा जोन बी दांतेवाड़ा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ता सहित चंद्रपुर एंड गडचिरोली इन महाराष्ट्र जोन सी बेलारी होस्पेट बेल्ट इन कर्नाटक जोन डी गोवा रत्नगिरी इन महाराष्ट्र एंड नॉर्थ कर्नाटका रीजन्स को जोन डी रह जाए जोन ई है ना मेटामॉर्फिक वीआईपी एवं वेस्ट कोस्ट ऑफ कर्नाटका एंड केरला वो जो कही तो जदि देखो रीजन माने रीजनल एरिया रे सिंहभूम पैटर्न में जो जाता है बनाई आयरन और रेंजेस इन झारखंड एंड ओडिशा एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ ईस्टर्न घाट रे जो लोकल माइनिंग होता है जोटी चेरला नवागुंडी तिरुपुरु होची ठाकुराणी गोवा तालदी बोलानी जोड़ा दैतारी ए रीजन में कहता माइनिंग होता है तापर सेमती होची छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और ईस्टर्न महाराष्ट्र सेक्टर में बैलाडीला ढाली राजारा आरीडोंगरी रावघाट और सूरजगढ़ डिस्ट्रिक्ट आईडी होची ईस्टर्न महाराष्ट्र रे देन बेलारी होस्पेट शिवमोगा रीजन ऑफ कर्नाटक गोवा है नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा ता सहित उदरगुड एंड उदर हिल्स ऑफ कर्नाटक और केरला रो वेस्टर्न घाट रे एसोसिएटेड हुए तो जनरली हमको आउट कहया ପାଇଁ मिले जे जनरली प्रेशर होची आयरन और प्रेशर डिपोजिट्स भाबे मिलता है जोटा कि केवल कुछ वेस्टर्न कोस्ट में मिलता है दैट इज रत्नागिरी कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र जनरली से आयरन को कहता है ना वेदरिंग ऑफ बसाल्ट डेक्कन बसाल्ट टू वेदर होता है जो आयरन रिच आयरन होना से लीच ठीक पड़ता है और कोस्ट डिपोजिट्स होते हैं एज ए प्रेशर डिपोजिट्स तो manganese is one of the ore which has a huge माने wide variety of use. तो सेमिति हमें और कुछ मैंगनीज को भी ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स सिलिकेट्स और पाते तो मेरा मन रखिए अपने वीडियो पायरोलुसाइट साइलोमेलर मैंगनाइट ब्राउनाइट ओस्मानाइट पोलैंडाइट वेडेनबर्गाइट सीताफाइट एंड वन मन रखिए हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज देन सिलिकेट विथ रोडोनाइट स्पेसाटाइट पोलिनाइट देन आसी जाए तार सल्फाइड
which variety भी अच्छी तो मोड ऑफ ऑकरेंस है ना जनरली टू टाइप्स ऑफ डिपोजिट्स मिलता है which manganese ro गोटे है bedded deposits आ गोटे है ना laterite deposits bedded deposits are generally sheet like deposits sheet tabular lenticular deposits consisting of different bands and which are laterally extended which shape like deposits of oxide iron in content like condite and porurite. So different variety of iron ଅଛି conditic iron বা poruritic iron. Then syngenetic deposits which bedded deposits are further divided into syngenetic and supergene deposits. तो which syngenetic रे primary oxide deposits तो primary oxide ଆମେ ଯେମିତି का iron ore ରେ ବି ପଢିଲେ ଯେ କଣ ହବ ନା iron weathered ହେଇକି ଆସିଲା ଆଉ କଣ ହବ ନା डिपोजिशन देला अंडर सुइटेबल कंडीशन रे तो ଆମେ ହଉଛି ଦେଖିବା କି ଆଇରନ୍ F2 प्लस ଆଉ Mn2 प्लस ର केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम किंतु एमाने डिफरेंट केवल कंडीशन रे डिपोजिट्स दिखंती ହେଲା whose different condition মানে suitable condition say same iron है generally pH associated Mn है pH associated तो pH condition change है manganese deposits देव pH condition change है iron deposits देव तो similarly कौन है ना जदि किसी रॉक अच्छी कॉन्टिनेंट रे which are manganese rich ସେମାନେ weathered ହେଇକି ଆସିବେ content are self under suitable condition different oxide of manganese deposits ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା manganese ହେଉଛି sedimentary manganese বা primary oxide manganese deposits then conditic deposits conditic deposits the condite are generally rocks so generally condites are metamorphic rock so these are non-calcareous manganiferous or manganese rich argillaceous sediments जोटा कि plutonic বা high grade metamorphisms ହେଇଥାନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି suppose ଏଟା ଗୋଟେ rock which sediments argillaceous sediments বা cells which are manganese rich or manganese ଗୁଡ଼ା ଏମିତି disseminated formation ଭାବେ deposits ହେଇଥାନ୍ତି ଏଠି so this rock or these sediments generally undergoes metamorphisms that is plutonic metamorphisms ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି ଗୋଟେ manganese ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଠି disseminated ହେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟରରେ segregate ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି silicates ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କହନ୍ତି gondite formations ତ gondite କ'ଣ ଥାଏ ନା generally consist of specific manganese oxides silicates ଆଉ ହେଉଛି ତା ସହିତ quartz these are gondite ଆଉ gondite deposits କୋଉଠି ମିଳିଥାଏ ନା ଆମର जनरली मध्य प्रदेश भंडारा नागपुर बालाघाट ऑफ मध्य प्रदेश गांगपुर ऑफ ओडिशा ओडिशा रे जो गांगपुर डिस्ट्रिक्ट जो है एसोसिएटेड विथ गांगपुर जो है जो मैंगनीज है these are all monditic type of deposits then khondalite source these are all syngenetic deposits then khondalite source कौन ना जनरली ईस्टर्न घाट रे हुए these are named after Khond tribes of Andhra Pradesh and Odisha. These are foliated metamorphic rocks generally consist of graphite, fluorine, garnet, sillimanite, schist calcareous. So garnet in the form of rhodonite it is present है. तो सेम ये भी कौन होता है ना plutonic metamorphisms of argillaceous sediments को एटा कौन होता है ना formation होता है khondalites then बुझिएला ना और किसी डाउट अछि then another type of bedded deposits is supergene deposits तो हमें जेमति पढ़ले
कि कौन होता है ना सुपरचिन डिपॉजिट्स में अनवांटेड मटेरियल गुड़ा से उची वेदरिंग प्रोसेस का रीच आउट हो जाए और हमर जहां उची द इकोनॉमिक मिनरल्स लाइक मैंगनीज गेट concentrated in that rock. तो सेरा कहते सुपरचिन डिपॉजिट्स जोड़ा कि गरबाहा और कोडोर रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में देखा को मिले. Then laterite deposits same process से जैसे का laterite iron formation होता है similar process होता manganese भी होता है किंतु टिके which condition change होता है different pH condition में कौन है कि वो ना कुछ manganese stable था तो सही जो है वो suitable condition generate होता है manganese deposits में सही टाइम में manganese deposits देखते हैं तो गोवा सांदूर ऑफ कर्नाटक regions ଆଉ laterite deposits ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ. Then origins. Then origins ଆମେ ପଢିଲେ hydrothermal deposits. तो hydrothermal process ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା hydrothermal process are generally associated with continental rift କିମ୍ବା Mesozoic region. तो suppose ଏଟା ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା continental rift ର ଅଛି. Continental drift point to a fault गुड़ा अछि. These faults act as a passage का pathway. तो hydrothermal fluid कौन natural water enriched fluid से कौन होगा ताकि capacity थी वो different ऊंची metals को reach करिया में तो hydrothermal fluid कौन करेगा ना iron ऊंची manganese को reach करके नेबो तो और एक fault गुड़ा हला ताकि passage का pathway भाई ऊंची help करियो ताकि ऊपर sediments generally this hydrothermal fluid get deposited here due to change in condition that is temperature, pressure or chemistry due to fluid rock interaction. जो hydrothermal fluid आसला sediments सहित react करना सेतेबेले chemical conditions change हो जिवो temperature change हो pressure change हो तो सेठी कौन होगा ना manganese deposits गुड़ा देखिए थे. This is the hydrothermal deposits का process. Then हमें sedimentary deposits पढ़ी formed by physiochemical action deposited from solution derived from pre-existing manganese-bearing minerals. तो pre-existing manganese-bearing minerals को content को weather ये वाला और suitable condition में oxygen condition में generally से different layers में bedded deposits देता है. This is a type of sedimentary deposits. Then residual concentration deposits. The residual concentration हमें बोलते हैं formed by secondary concentration removing of the gangue minerals from the pre-existing manganese-bearing deposits. The pre-existing manganese-bearing deposits को कौन होगा ना gangue minerals को बाहरी चीज़ों और सेठी जो manganese concentration बढ़ी जाए. Then magmatic deposits. The formed by magmatic concentration forming MMO deposits usually associated with corduroids. The corduroids are generally hybrid rock. These are formed by the assimilation of manganese ore, that is manganese silicates, and igneous magma. तो जदि गोटे ऑलरेडी मैंगनीज सिलिकेट्स अच्छी तो igneous mineral igneous magma आसला जनरली एसिडिक magma आसता है से कौन करेगा ना मैग्मा एसिमिलेशन हमें पढ़ी igneous तो एसिमिलेट करके गोटे हाइब्रिड रॉक देता है जहाँ को हमें कहते कोडोराइट्स तो सेठी जोटा कि मैंगनीज डिपोजिट्स कोडोराइट रॉक सहित एसोसिएटेड होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ मैग्मेटिक डिपोजिट्स. ओके तो मैग्मेटिक डिपोजिट्स कौन. So these corduroids are generally hybrid rock consist of one feldspar type that is the manganese rich होता है. Then metamorphic deposits. So metamorphic deposits are generally gondatic or chondritic deposits. Gondatic में हमें पढ़ने तो जन कौन होता है ना manganese rich cells पूरा कौन होता है marginal stocks undergoes plutonic metamorphisms for which the further previously disseminated manganese get concentrated and form gondatic rocks. Similarly, chondrite भी बनता है ना
carbonate rich sediments गुड़ा ଯେତେବେଳକୁ artificial sediments undergo vulcanic metamorphisms ସେତେବେଳକୁ thondrolite deposits rock formation होते हैं ଯୋଉଟା କି consist of rhodonite which is manganese rich तो ଏଟା ହେଲା origin ଏତିକି then uses तो manganese generally first use होता medicines cosmetics में किंतु ଯେତେବେଳେ को आयरन which is steel alloy ର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ତାପରେ manganese ର यूज କରିଗଲା steel ରେ so ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ percentage of manganese steel ପାଇଁ यूज फेरो alloy ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ନା यूज ହେଉଛି about 90 to 95 manganese produced in the world is used in steel making in which the purpose is to remove oxygen sulfur to produce clean metal तो कौन है ना मैंगनीज जितने यूज हुए सेतेबलको ऑक्सीजन और सल्फर कौन करता है ना बाहरी रहता है तो क्लीन मेटल फॉर्मेशन होता है ता सहित कौन करे ना मैंगनीज स्टील रो स्ट्रेंथ हार्डनेस और वर्केबिलिटी को इंक्रीज करे तो सेति भाई एमएन स्टील इज यूज्ड इन आर्मर प्लेट्स प्रोजेक्टाइल्स कार व्हील्स कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीनरी ता सहित manganese to different painting pigments dyes और different fertilizers यूज करें माने तैयारी करने पे यूज करा जाए then distribution तो टोटल जेति कि हम इंडिया रे रिजर्व्स अछि around 135 million tons of reserves are there in India out of which 100 million tons are in Madhya Pradesh Maharashtra zone only and 35 millions in the other areas तो हमें पढ़ने मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र जोन छिंदवाड़ा बालाघाट मध्य प्रदेश नागपुर एंड गोंडवाना ऑफ महाराष्ट्र रीजन्स एंड वे which manganese deposits रहते हैं देखा जाए and these deposits are generally gondolitic type then in case of Bihar Odisha and Andhra Pradesh which is in Chaivasa area of Singhbhum Borjamta Bihar in Odisha Keonjhar Nagpur Bonai Sundargarh in these regions, manganese deposits are present. Among these, the manganese deposits of Kanpur are gondolitic in nature, and in Keonjhar and Sundargarh, it is lateritic or residual concentration in nature. Karnataka and North Kannada, Chitradurg, Shimoga, Tumkur, Bellary Hospet region of Karnataka, देखा जाए तासुतो वेस्ट बेंगल में मेदिनीपुर में मैंगनीज डिपोजिट्स प्रेजेंट अछि तब जमरे माइनिंग करा जाए एटा सबला हमर मैंगनीज